बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोल ऑफ थेरीज़ इन कम्युनिटी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं और बहुत सी डिफरेंट थेरीज़ को कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं और उनके रोल को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी थेरी जो है वो जो पर्सपेक्टिव है हमारा कम्युनिटी का वो कम्युनिकेशन फॉर चेंज है और जो थेरी हम डिस्कस करने जाएंगे वो कम्युनिकेटिव एक्शन थेरी है। चेंज की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि वी नीड कम्युनिकेशन फॉर चेंज। तो कम्युनिकेशन में कहीं पर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन प्रपोज कंडीशन इन विच सब्जेक्ट्स from an ideal situation or speech seeks to solve their deadlock by using argumentative dialogue that is free of pressure in order to reach an understanding and draw a consensus. कम्युनिकेशन में जहां पर गैप आ जाता है, जहां पर डेडलॉक आ जाता है, जहां पे प्रेशर आ जाता है, वहां पे कम्युनिकेशन रुक जाती है। जब कम्युनिकेशन रुक जाती है तो प्रोग्रेस नहीं होती। कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी ये कहती है कि आपको फ्री ऑफ प्रेशर होके डायलॉग करने चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए ताकि मुआशरा आगे बढ़ सके। क्योंकि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको कम्युनिटी के ही रेफरेंस से देखेंगे। Communicative action describe the layer where monetary and bureaucratic structures meet the life world. Habermas, in presenting this approach, is concerned about the domination and rationalization of life world in which science and technology are unable to address complex public issues. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे वहां पर साइंस भी कोई काम नहीं कर सकती, वहां पर टेक्नोलॉजी भी कोई काम नहीं कर सकती अगर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर डेडलॉक है। Habermas proposed some important concepts to define the theory of communicative action, among them moral conscience, communicative action, dialogic knowledge, and communicative rationality. In Habermas' concept of communicative rationality, knowledge is given through a competence of dialogue in the possibility of exchange in giving to the other with respect to the differences and sharing of the life world present in the discussion about critical thinking, since it is desirable that the student can identify the real meaning of elements and these within a given context. जब तक आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती और वो उसमें डेडलॉक रहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस कॉन्सेप्ट को उसके ओरिजिनल एसेंस के अंदर आप उसको डिस्कस करें। In this aspect, the communicative action theory proposed to investigate the reason inscribed in everyday communicative practice and to reconstruct from the basis of validity of speech an unrestricted concept of reason, understood as a result of learning as a social, communicative, and dialogic evolution. Habermas' communicative action theory is guided by the interactions of technical and corporate knowledge with local and practical knowledge. Combined, they can lead to new kind of emancipatory knowledge that offer fresh ideas and action. Therefore, communicative action blends the practice of argumentation, reflection, and understanding, which seeks freedom from pressure and the imposition of ideas that impede creativity and critical knowledge. It can be characterized as a type of social action that through intersubjectivity aims at anatomy describe the rights. Therefore, the communicative action to actually take place, it assumes the following pretensions of validity. Number one, every subject capable of acting and speaking can participate in discussion. हम क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो वो तमाम लोग जो कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और वो कैपेबल हैं बोलने के, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कम्युनिटी की डिस्कशंस के अंदर. Any participant in the dialogue can problematize and introduce a new statement, express their need, desire and conviction. वो तमाम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी राय दे सकते हैं
प्रॉब्लम को प्रॉब्लमटाइज करने के लिए स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो कैसे जो है उसको बयान करते हैं. नो स्पीकर कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ हिज प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड राइट. किसी को आप उसका हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते जो कि आप उसको पहले से दे चुके हैं. This theory argues the power and dominance are directly related to communication found among social systems on the macro level and their interaction with more locally based systems such as communities and groups. Communication from this perspective is shared from a power base, as bureaucracies and market distribute information to local groups or parties. Therefore, the communication action theory asserts that communication should be unfiltered and inclusive with the use of public representation. आपको तमाम चीज़ों में तमाम जो थेरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें एक बात जो कॉमन लगती है वो यूज़ ऑफ पावर है या पावर का हसूल है. तमाम किसी भी मुआशरे में जब हम रहते हैं तो हम पावर हासिल करना चाहते हैं. तो कम्युनिटी वर्कर का ये रोल है कि वो इन तमाम थेरीज को इस्तेमाल करते हुए कैसे पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करता है लोगों के अंदर ताकि मुआशरे के अंदर इनइक्वालिटी ना रहे. और अगर यहीं पे कम्युनिकेशन में डेडलॉक आ जाता है तो वो लोगों को कैसे मोटिवेट करता है कि वो इस डेडलॉक को थ्रू डिस्कशन एक दूसरे से इस डेडलॉक को ख़त्म करते हैं. आज के लेक्चर में हमने कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा. अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी जो है वो कैसे हेल्पफुल है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर. थैंक यू वेरी मच.